Namaskar. Hello and welcome to the day two of this Tete-a-Tete with chroniclers of Modi Rajya, whereby the maiden series, the part one of it is spearheaded. It is led by none other than Randeep Sisodia ji, the author of The Crusader, the book on how Narendra Modi won the 2019 elections. Management leadership consultant, a leadership coach in his own right, having a 2.5 decade of experience across human resource functions. Randeep ji is an avid student of politics, and he has a very special knack of finding out organizational values in the domain of politics. So what happens in the organizational spaces of business entities, he tries to see it from a different lens in the domain of politics per se. Yesterday was the 73rd birthday of the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. We started this series on that to have a nuanced understanding of what lies beneath what is being called as the exponential efficacy of the government business in these 9 years of his prime ministership. And yesterday in the maiden session, Randeep ji illumined us so very well with a lot of anecdotal evidences as to what shaped the persona and the beliefs of Narendra Modi ji, who had a deep imprint of Swami Vivekananda's Vedantic purport and his decisive, fearless decision-making was a big, I would say, big discussion of yesterday. And today, carrying forward this journey, this yatra, Randeep ji would be illumining us, would be educating us more because being an author, he has researched and seen things from a different vantage, from a very, I would say, a kind of probably a cosmic lens ki bhai, because and what we also discussed yesterday, what we also communicated, that his personal background coming from Hoshiarpur, Punjab, he got his own political beliefs. He has seen those things in action. So he has that first-hand ringside view of politics, and that's why he's able to appreciate and enumerate it in such a deep insightful fashion. So what constitutes Modi's differentiated and unique governance style, which is obviously today we had the first day of the special session of the parliament, and tomorrow on the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi, India would be getting her own indigenous parliament house for the first time. Because what the parliament house we had, it was a colonial relic. So for the first time, the people of India have constructed a fresh parliament house with a new umang and spurti. So this again adds up to Modi's, I would say, deck of accomplishments, so much of gigantic accomplishments in just, I would say, small 2 tenures of prime ministership. So over to Randeep ji to carry forward this Jnana Yagya, this learning. And I would like to reiterate the buzzword of his book, which really strikes छू लेती है उस बात को कि he wanted to write a book on leadership with politics as a backdrop, but eventually he transcended by studying Modi. He wrote a book on politics with leadership as a backdrop. So we are trying to find out the nuggets of leadership from the persona of Prime Minister Narendra Modi. So over to Randeep sir to take us forward in this learning. Thank you, Raghavji. Namaskar to you and all the guests who joined us. So since you talked and you mentioned so much about leadership, just another interesting nugget which I want to share with you is that while leadership and management is talked a lot and applied a lot in corporate world, but actually it's a construct which the corporate world adopted from the army, from the armed forces, because that is where the leadership, the management of men was so critical, because you wanted people, or you wanted soldiers who would die for you, who would die for your word, who would die for the country. So how do you
manage them? How do you motivate them? So this leadership concept actually came from the field of armed forces, and then it got applied to the corporate world. And so the point I'm trying to make is that this concept is really universal and actually can be applied to all the fields. And especially, I believe that it must get applied. It's high time actually that it is also applied to the political field, the political spheres, because that is one field which has the most important and critical impact on the nation and the development of people. So it's really very very important that we apply the leadership principles, which by the way are very scientific in nature, because when you talk about leadership, it is about leadership of people. So when it comes to people, it is a lot about psychology, and psychology is a science. So we read a lot about science. So a lot many times when you see people, and especially journalists who have no background on leadership principles, Mhm. they talk about leaders being enigma. But I as a student of leadership and group and people behavior and person behavior, find it a bit funny, because for us we actually can clearly see why people are behaving in a way that they are behaving. So for example, we are going to talk about the governance style of Narendra Modi. Really in management and leadership, there are really four, five key styles of leadership. So when people say this person is an enigma or that person is an enigma, actually students of leadership are able to actually slot them very well in terms of where exactly are they coming from, because they are able to characterize them basis the 4 5 key leadership styles. So for example, let's say let's look at somebody like Manmohan Singh, and we know that he was really an accidental prime minister, right? And in the sense that uh, the ministers under him really had a free reign, in the sense that they would do as per their own wish, and all the critical files will actually be going to 10 Janpat for signatures or sign-offs for decisions, rather than the prime minister. So he really, while being in a position of power, he never really wielded power, the way he should have, right? And so after that comes Narendra Modi, who seems to be at an exactly opposite end, because he's so involved, right? And so that is where this whole propaganda of Congress started saying that, oh look, because they wanted to make Manmohan Singh look good, they started criticizing Modi for his dictatorial, for his authoritative style. But is it really authoritative style? Mhm. So if you look at, let's take few examples. Let's look at people who work under him. Let's look at Nitin Gadkari. Do you think he controls Nitin Gadkari? Do you think Nitin Gadkari does not have a free hand? Okay. Then let's look at somebody like Jaishankar, Mhm. who's really going around and crafting this vision around new India, and shaping that vision and sharing that with the whole globe, so that globe is able to understand what new India is all about. And he does it with a lot of panache, and you can see when he is talking about India and what our policies are, you can see that it's coming from his own internal self. There's nobody who's guiding him from behind. There's nobody who's putting words into his mouth. So, do you really think somebody like a Modi is overpowering this person like Jaishankar? Then you look at Ashwini Vaishnav ji, who's the railways and IT minister.
I mean, the kind of work he's done in that area. Do you think Modi really had the time to get into those details of, how the railway lines are going to be laid down, or how the railway stations need to look, and what kind of infrastructure is needed? Do you really think Modi is kind of really overpowering him, or really providing directions on a probably very regular basis? No, I don't think. I So it's very clear, it's not he's not doing that. But one thing which he's definitely doing is he's a lot more engaged, with all the ministries, right? That is one. And secondly, what he's doing is he's aligning all these ministries with each other, right? So now let's look at, now, having given a brief background on these two different leaders. Now let me share with you the key four principles of leadership that we study. Mhm. On the basis of which we slot leaders. Okay, this person is this kind of a leader, and a person B is this kind of a leader. So the first style of leadership is called laissez-faire, which Mhm. basically means the person, a leader who gives a free hand to people, who's not at all involved, who does not utilize, his power. People do as they feel like doing. There is no involvement. There is no engagement. So that is one kind of leadership. Now, if you see Manmohan Singh, I immediately slot him in that. He was a laissez-faire kind of a person who wielded no power, no authority, with no directions. The other thing is, let's not be literal about it. Literal. I mean, nobody is perfectly fitted into a slot. Generally people are hybrid. But yes, the dominant style is of Manmohan Singh. You would actually put him in that slot, right? Which does not mean to say that he took no decisions. Probably he did take. I mean, one of the things we all of us appreciate him is on the stand which he took on the nuclear deal, right? So there was those elements over there, but broadly you categorize him in a laissez-faire style of leadership. Then the second style, the exact extreme of that you can call is the authoritative style. Now, Mhm. authoritative style is something wherein a leader is directing each and every small details to his people down the line. He's taking each and every decisions, right from how the nut and bolts have to be tightened, to how the engine needs to be driven. So all the works. And that person he exercises his power, authority. There's a lot of strictness. There's a lot of authority exerted. Uh, so 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 that is the kind. There's a fear created about his position. So there's a fear. There is authority. So all that is the authoritative style. And the third style is the participatory style, wherein a leader involves, his subordinates or people who work under him in decision making, right? So there are a lot of discussions. There's a lot of appreciation. There is a lot of, acknowledgement, and the person is really involved and engaged. So because of that, the people under him are also motivated to work with this kind of person. What There is no more than the authority of the position. What is at work is the authority of influence, personal influence. So when I and you, supposing you are my leader, but you have a discussion more on a one-to-one basis as equals with your subordinate, so people feel engaged and involved, right? And then you just on this participatory style, if you take it a step above, then it is the last style is the transformational style, which is that person, that the leader not just involves people but also creates a vision for them, which is so empowering, and which is so inspiring that people themselves want to work, and they give in their more than 100%, right? So
Now, if you look at Modi, where would you fit him? Somebody who creates a big vision, and by the way, Modi does that, isn't it? So this, let's look at the Vision 2047, which he has drafted. It's a very detailed document if you look at it. So in 2047, we are going to be a developed nation, which means to say that our GDP is going to be more than 30 billion. From currently, it's around 3.5 to 3, between 3.5 to 4 billion. So, and our per capita income is going to be growing from right now, I think it's 2 lakhs. It's going to go up to around 15 lakhs, right? So that's the vision. And to achieve that vision, he's also clearly highlighted what are the key things that we need to work on. So if you recall, on August 15, he talked about 5 key things that we need to be working on. He also, by the way, pointed out 3 challenges that we need to be wary of. So one of the challenge was really corruption. So we need to root out corruption if we want to achieve that goal of being a developed nation. Second was about, if I'm not wrong, it was about appeasement. So everybody needs to be treated equally. There needs to be no appeasement. And the third one, obviously, was nepotism, which was basically around dynasties. And so there should be no chacha bhatijawad in this nation. And then he also listed down what should be the 5 key focus areas. तो उन एरियाज में पहला वाज यूनिटी, वो किस मतलब वी नीड टू सबका साथ सबका विकास वाला बात था. Second, I believe, was around women empowerment and women led growth, and that is why I feel uh, um, uh, that could be one of the historic bills which may be coming up now in the parliament. I cannot say for sure, but waiver reservation bill can be one of the bills which is right now being deemed as most historic bills which are going to come up. I also believe probably there are going to be more than one historic bill that is going to get introduced in this special session of Parliament. But let's wait and see. So the point is, such kind of a vision, it motivates everybody, and people feel they go out of the way, to work on this, and they feel so energized. The vision should be so empowering. It should be so highly impactful that it energizes people. So that is so if you really look at Modi's style, it is more bordering on the transformational style of leadership. And he talks a lot about reform, perform, transform. There's a lot of this in his talks, in his speeches, and then you see that his ministers also down the line, they also act on that. The other thing which he does very well is he leads by example. So it is not just that वो लोग ही गधा मजदूरी कर रहे हैं. हमको पता है कि मोदी जी 16 से 18 घंटे काम करते हैं. तो जो 75 साल का जो वृद्ध आदमी, अगर इतनी एनर्जी है उसमें, और सातों दिन हफ्ते के और 365 दिन बगैर छुट्टी लिए काम कर सकते हैं, तो 40, 50, 60 साल के जो लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं, फिर वो खुद ही मोटिवेटेड होते हैं कि हमको अगर वो कर रहे हैं तो फिर हम भी करेंगे. तो वो देयर इज अ लॉट ऑफ I would like to what the gem what Randeep ji has really presented, and it's quite a nuanced aspect. He has first of all busted the journalistic binaries. Somehow the other, the journalistic way of looking at political affairs is like black and white, whichever camp you are or whatever way you want to project and present. And politics being a field which is so full of uncertainties, you have to placate such a vast constituency, such a diverse constituency, that the control is really not very much in your very hands. So between the two extreme boundaries of authoritative and laissez-faire, and somehow in the 10 years what the country saw a kind of a very laissez-faire kind of a leadership, probably a decisive way we had forgotten in a big way. So when he adds upon
the participatory and then the transformative. Perhaps this is a different dimension. This is a different Cartesian axis, which is participatory. It's a different, I would say, universe per se. Now, this is very, very vital, and that is why it's important to look things from a purely academic perspective, which is objective in nature. It is not like you are just doing a Jhanda Bulandi kind of a thing. You're observing the work, and then Randeep ji now was carrying forward ki bhai, leadership by example, working so very hard on yourself, because running such a vast country, like see the massive, I would say the G20 success. There are reports that America is sending teams to understand ki how this was made a public affair, because otherwise it used to be a kind of an elitist bastion, 2 or 3 cities and some top level geopolitical considerations. But then it was transformed into a people's movement, because all the issues concern the people out there. So phenomenal, phenomenal. Randeep ji, please carry on. I just wanted to emphasize upon it that this has to be really understood. This has to be read, not from any singing the paeans of a political leader, because this is the two styles we see, we keep on hearing in the journalistic domain. Ki bhai, there is one authoritarian and then there is the paragons of democracy. But within a democratic construct, someone has to be on the driving wheel. Someone has to sign the dotted lines and take the decisions. Okay, this has to be done. This has to be taken forward while taking everyone on board. So I think that is the underlying part, and maybe in posterity, long after this reign is over, people will be, when the declassification will happen, how the conversations happened. Abhi to sabhi log speculate karte hain, but Randeep ji has tried to see things from his own lens, and he's presenting us those insights. Sir, please, over to you. So the other key aspect, really, and I think everybody knows that, is the execution. So leadership is not just about creating a vision. It's also about getting it implemented by people. And so while the people may be motivated and they may be totally empowered and they may be totally energized and they may be totally inspired, but then the all the efforts need to be aligned together of different functions. So let's take an example of project Gati Shakti, right? So I'm sure you have heard about this, but this is a new team which PM Modi created to oversee and align different departments who are driving the investments in infrastructure, right? So Nirmala ji had, I think, couple of years in 2020, she had announced that we are going to spend around 100 lakh crores in infrastructure. So 20 lakh crores every year. And the kind of push we've had in terms of building roads, expressways, railway lines, airports, waterways. So all that has been happening, and it actually involves 16 different ministries, right? So just to align all those ministries and to ensure that work happens on time, all the decisions and approvals are given on time, and people are working together. This project Gati Shakti was created. So on the dashboard, you can actually review the progress, and so that's one of the very important things in execution for a leader, to review project on regular basis, and that's one of the reasons why Modi has created this, to review, to first of all be very clear where things stands today, on a regular basis. Are we in the process of meeting the timelines, or are they going to get delayed? If they are going to get delayed, what is it that we need to differently to ensure that ये time पे project finish होगा कि नहीं? So all that, and you've never seen this kind of thing earlier happening in the past. Now let me tell you why it is so important. Let me give you a very small example. अब हम बहुत बार देखते हैं अपने आसपास, जब नई सड़क बनती है एक, सब, तो एक नई सड़क बनती है और फिर हम देखते हैं टू आवर सरप्राइज कि 2-3 महीने बाद वो सड़क टूटने लगती है, क्योंकि वह वायरिंग ले करना होता है, राइट?
एंड देन वी थिंक हम अपना माथा पकड़ लेते हैं कि ये पहले क्यों नहीं सोचा सरकार ने। तो ये क्यों नहीं सोचा, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नहीं था रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और टेलीकॉम मिनिस्ट्री में। सो ये छोटा सा एग्जांपल है, बट ये दर्शाता है कि कितना बड़ा हम रिसोर्सेज का नुकसान करते हैं। और यही प्रोजेक्ट शक्ति का one of the reasons why one of the goals was to create this was to ensure that अगर एक रोड बन रहा है तो पैरेलली वहां पे जो भी लाइंस बिछनी चाहिए टेलीकॉम की या केबल वायर्स बिछनी चाहिए वो उसी साथ में बिक जाए, ना कि 3-4 महीने बाद फिर रोड को तोड़ा जाए और उसमें पैसे का भी, सरकार का पैसे का नुकसान होता है, टाइम का नुकसान होता है, और इनकन्वीनियंस लोगों को, हम आपको इनकन्वीनियंस होता है कि अभी तो रोड बना था फिर टूट गया, और फिर वो बनने में दोबारा 4-5 महीने निकल जाते हैं। सो this is very important. This is something which Modi does very well. Let's take another example. जो जन धन योजना है, आपको याद होगा जब मोदी जी ने ये बैंक अकाउंट्स खोलने शुरू किए तो ऑपोजिशन कितना उपहास उड़ाता था, ये बैंक अकाउंट तो खुल रहे गरीबों के बट खाली रहेंगे, राइट। बट इवेंचुअली क्या हुआ, वो बैंक अकाउंट भी खुले। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर वो बोला गया कि आधार कार्ड सबका बनेगा, तो वो मजाक शुरू हो गया कि सबका आधार कार्ड बनेगा, क्यों बनेगा, क्या करेगा गरीब आदमी आधार कार्ड का। इनफैक्ट टू द एक्सटेंट की यू नो जो कांग्रेस पार्टी है थ्रू कपिल सिब्बल, दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट कि ये आधार कार्ड नहीं यूटिलाइज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली उन्होंने वो रिजेक्ट कर दी, वो अपील हार गए। बट द आइडिया विच वाज देयर इन द माइंड ऑफ मोदी वाज कि उसको इन तीनों चीजों को और तीसरी चीज ऑब्वियसली मोबाइल, विच हमको पता था कि आजकल हर हिंदुस्तानी के पास मोबाइल है, तो जनधन योजना गया, वो जैम बन गया, और उससे फिर क्या हुआ, सारी स्कीम्स जो थी, वेलफेयर स्कीम्स जो गरीबों तक पहुंचने लग गई डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में, जो भी वेलफेयर स्कीम्स थे, जो सब्सिडीज थे, वो सारे उनके अकाउंट में जाना शुरू हो गए। तो उससे क्या हुआ कि आपको याद होगा राजीव जी ने बड़ा फेमस एक स्टेटमेंट दिया था कि सरकार जो 1 रुपया खर्च करना चाहती है गरीबों के लिए, उसमें से सिर्फ 15 ही पैसे पहुंचते हैं। और वो सिचुएशन है, और आज की सिचुएशन है जब 1 रुपया का पूरा 1 रुपया गरीब के खाते में तुरंत चला जा रहा है। तो करप्शन खत्म हुई, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, और जो एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई। और पहले आज की डेट तक मेरे ख्याल करीब 21 लाख करोड़ रुपया गरीबों के खातों में जा चुका है थ्रू वेलफेयर स्कीम्स, थ्रू सब्सिडीज। आई थिंक 2-2.5 लाख करोड़ तो सिर्फ पीएम किसान योजना में के थ्रू किसानों को गया है। करीब 15 लाख किसानों को, 15 लाख नहीं, सॉरी, 14-15 करोड़ किसानों को वो गया है। सो आप सुन पा रहे हैं मुझे राघव जी? जी सर, बिल्कुल loud and हाँ clear. हाँ Yeah, हाँ, yeah. ओके ओके ओके। सो वो अनदर एग्जांपल है। और थर्ड एग्जांपल लेते हैं डिजिटल इंडिया का। तो वो जब शुरू हुआ था, शुरू में तो आपको याद होगा कि चिदम्बरम जी ने पार्लियामेंट में उपहास उड़ाया था कि इसका क्या फायदा, जो बूढ़ी औरत एक गांव में सब्जी बेच रही है वो, उसको क्या फायदा होगा डिजिटल इंडिया का। और आज की डेट है कि वही बूढ़ी औरत अपना यूपीआई कार्ड देके अपना सब्जी बेचती है और उसके थ्रू पैसा ले लेती है। तो तो ये जो विजन है, और ये जो विजन का जो इम्प्लीमेंटेशन है ग्राउंड पे, वो जब तक लीडर को सभी ये चीजों का ध्यान रखना, उसको लीडर एक विजन भी क्रिएट करना है, इंस्पायरिंग विजन, और इंश्योर करना है कि वो एग्जीक्यूट हो, इम्प्लीमेंट हो एट द ग्राउंड लेवल पे, और लोगों को उसका बेनिफिट मिले। और वो आता है एक्सपीरियंस से भी, सो हमने देखा है कि मोदी जी 13 साल पहले चीफ मिनिस्टर रहे, और वो खुद मानते हैं कि क्योंकि मैं स्टेट में था तो मैं जानता हूं
कि काम कैसे होना चाहिए, कैसे जो जो बोलते हैं कि मैंने प्लानिंग कमीशन हटा दिया। क्यों हटाया? बिकॉज उन्होंने देखा फ्रॉम अ स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने देखा कि उसका कोई फायदा नहीं था। इनफैक्ट वो शैकल्स ज्यादा क्रिएट कर रहा था रादर देन एम्पावरिंग पीपल। तो वो हटाया, नीति आयोग आ गया, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो दर्शाता है कि देयर इज रियली ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एट वर्क। अब जो अथॉरिटी जो तो वो क्लियर हो गया, राइट। अब एक और मैं एग्जांपल दूंगा कि व्हाई मोदी इज नॉट रियली अथॉरिटेटिव। अब आप देखिए 2017 में यूपी के इलेक्शंस हुए, राइट। बीजेपी ने अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया था, और उस समय चर्चा ये थी, तीन चार बड़े बड़े नाम जो हमारे पास आ रहे थे कि अगर बीजेपी जीतेगी तो या राजनाथ सिंह जी होंगे, या मनोज सिन्हा जी होंगे, या फिर मौर्य जी जो आई थिंक बीजेपी प्रेसिडेंट थे, या फिर उनका मैं पूरा केशव नाम भूल रहा हूँ। केशव 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 मौर्य जी, जो कि इवेंचुअली डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे। तो इन तीनों का और भी थे, बट इन तीनों का नाम बढ़ चढ़ के आ रहा था आगे। तो ऑब्वियस है कि ये नाम लीडरशिप, बीजेपी के लीडरशिप के थ्रू ही आ रहे थे। वो पर्कुलेट, वो स्पोक्स पर्सन के थ्रू, और मतलब बैक चैनल से ये फ्लोट किया जा रहा था। लेकिन क्या हुआ इलेक्शन के बाद? इलेक्शन के बाद ये हुआ कि जब बीजेपी लीडरशिप ने एक टीम अपॉइंट की, जाके विधायकों से बात करने को, और मतलब ये जांच उनको भांपने को कि कौन रियली लीडरशिप ले सकता है, तो एक नया चेहरा आया सामने, और वो नया चेहरा योगी जी थे, और बीजेपी लीडरशिप टॉप पे उन्होंने एक्सेप्ट किया उनको। तो ये नाम ऊपर से कभी नहीं आया। तो ऑब्वियस है कि योगी जी नहीं थे कंटेंशन में कभी भी, लेकिन नीचे से नाम आया, तो विधायकों से नाम आया। और बीजेपी की परंपरा भी रही है। आप देखिए मोदी जी का खुद का चयन ही कैसे हुआ था। जब 2013 में पीएम कैंडिडेट डिसाइड होना था, तो उस समय बड़े बड़े दिग्गज थे। उस समय दिग्गज थे, अडवाणी जी थे, सुषमा जी थी, जेटली जी थे, उनसे सब सीनियर थे। लेकिन नीचे से वो जब मोदी जी का नाम नीचे से आया, तो ये पार्टिसिपेटरी स्टाइल बीजेपी का, मेरे हिसाब से जो मैंने नोट किया है, ये उनका डीएनए है। ये अब ये लोग बोलते हैं कि इलेक्शन नहीं होते बीजेपी में। अरे उनका इलेक्शन तो वो उनका डीएनए है। उनका इलेक्शन तो इतना बढ़िया है कि वो नीचे लेवल से डिस्कशन शुरू होके वो ऊपर तक आते हैं नाम, और उसमें फिर कोई भेदभाव नहीं होता है। उसमें कोई डिसीट नहीं होता है कि अच्छा ये नाम आया था, पर बोल देते हैं कि ये नाम आया था, ए का नाम आएगा तो नहीं, ए का नहीं, बी का आया था। ऐसा नहीं होता है। तो एनीवे, तो वापस आते हैं, तो योगी जी प्राइम एग्जांपल। वो जो जो डिसीजन हुआ, वो लीडरशिप का डिसीजन नहीं था, वो लोगों का डिसीजन था। लीडरशिप ने उसको एक्सेप्ट किया, अपना बनाया। ऑब्वियसली उन्होंने उसको जांच की होगी, जांच पड़ताल परखा होगा। इनफैक्ट आपको याद होगा कि इलेक्शन के इमीडिएटली बाद योगी जी ने खुद ही बोले थे कि जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए, अनाउंस हुआ, वो वापस गोरखपुर चले गए थे, और अपना उन्होंने काम शुरू कर दिया था। वो तो उनको फिर जब विधायकों से जब मीटिंग हुआ, जब उनका नाम ऊपर आया, फिर उनको दिल्ली बुलाया गया, एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन भेजा गया गोरखपुर कि नहीं आप तुरंत आइए दिल्ली। दिल्ली में आए वो, फिर उनके इंटरव्यूज ऑब्वियसली, फिर वो मोदी जी से मिले होंगे, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट मोदी जी से ऑब्वियसली मिले होंगे, अपने अमित शाह जी से मिले होंगे, उस वार्तालाप हुआ होगा, फिर डिसाइड हुआ होगा कि नहीं ये रियली केपेबल हैं। और जो उन्होंने जो विधायकों की जो सिलेक्शन था उसका सम्मान किया। तो एक और क्लियर कट केस है कि इसमें कोई अथॉरिटेटिव नहीं है इस चीज में। ये सब नीचे से उभरे हैं। और आप आज देख लीजिए, चाहे वो हेमंता विश्वा शर्मा हो, नीचे अन्नामलाई हो, वो सब लीडरशिप अपने आप नेचुरल लीडरशिप उभर के आ रही है। लेकिन हाँ, उनको ग्रूम किया जा रहा है। सो दैट इज द अदर थिंग, द की critical quality of a leader is to develop leaders under him. So आज की डेट में आप देखिए, बीजेपी इज प्रॉब्ली इन अ वेरी हैप्पी सिचुएशन, वेर इन मोदी जी के बाद कौन, तीन चार पांच ऑप्शंस हैं बीजेपी के पास। मतलब योगी जी हैं, अमित शाह तो है ही हैं, लेकिन आप आज देखिए, जयशंकर जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नितिन गडकरी जी कर ही रहे हैं,
और और हेमंता विश्वा, और वो उसकी नेक्स्ट लेवल पे के बाद भी हैं कि वो हेमंता विश्वा है शायद इन लोगों के बाद, और उनके भी बाद अन्नामलाई जैसे लोग हैं टीएन से जो उभर के आएंगे, फडणवीस हैं महाराष्ट्र में, और मतलब स्मृति जी हैं, स्मृति ईरानी हैं। तो मतलब इट्स बीजेपी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, और उसका क्रेडिट आपको मोदी जी को देना पड़ेगा, वो डेवलप कर रहे हैं लीडर्स को। सो वो एक अनदर एस्पेक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट के लीडरशिप, मतलब अपने आगे का सोचना। सो वो विजन ही क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बट वो ऑल्सो लीडर्स जो विजन को फ्रक्टिफाई करेंगे कल, वो भी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि 2047 तक तो मोदी जी नहीं होंगे, लेकिन हाँ उनका ये दायित्व है कि इंडिया को ऐसी लीडरशिप देके जाएं जो कि इंश्योर करे कि वो विजन को अचीव किया जा सके। अब ऐसी और आप देखिए कौन पार्टी कर रही है ऐसा, सब तो अब इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ये पॉलिटिकल डायनेस्टीज को एकदम खत्म किया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल डायनेस्टी में कैपेबिलिटी नहीं देखी जाती है, वो तो आपका वो लीनिएज देखा जाता है, आपका वो जन्म सिद्ध अधिकार माना जाता है। अब आज राहुल गांधी, माफ कीजिएगा बोल रहा हूँ, आज राहुल गांधी किसी और पार्टी में होते, उनकी क्या पोजीशन होती है आप बताइए? बीजेपी में होंगे, उनकी क्या पोजीशन होगी? उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो कोई पोजीशन होल्ड कर सकते हैं? राहुल गांधी जी को बहुत अपॉर्चुनिटी था, इतने साल उनकी सरकार रही कि पोजीशन एक होल्ड करते, आज तक उन्होंने कोई पोजीशन होल्ड नहीं करी है। वो सीधा पीएम ही बनेंगे वैसा, वही अब वो एंटाइटलमेंट एक घुस गया है दिमाग में कि नहीं नहीं हम और कोई, चाहे वो कोई भी और कैबिनेट पोजीशन भी हो, वो भी उनके लिए छोटी है। तो मतलब ये आजकल के जमाने में कोई भी यूथ है, आप भी हो कोई भी हो, इट्स ये वेरी ओल्ड स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। ये मेरे मेरे हिसाब से तो और मोदी जी ने ठीक कहा, जातिवाद से बड़ी प्रॉब्लम तो ये परिवारवाद है, और तभी परिवारवाद को वन ऑफ द थ्री चैलेंजेस बोला गया है, उन्होंने बोला। तो वो इट्स वेरी राइट, ये नेपोटिज्म खत्म होना चाहिए इंडिया से। सो हाँ, ब्रॉडली, यू नो दिस वाज जस्ट अ ब्रॉड, सो यू नो। इसमें कौतूहल आता है, जो एक प्रोजेक्टेड रियलिटी ही कह दीजिए कि एक तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसा अनुशासित लोकतंत्र जो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेटिक ऑर्डर है, जो इतना अनुशासित है कि इट बिल्ड्स अप अ कंसेंसस बॉटम्स अप, and it tries to accept and gives that power to the chosen leader for a finite Yes. period of time. तो आज के इस टाइम में when everyone looks for the grapevine for dissent and all kind of तमाशा in the political space, तो वो palatable कम लगता है, that is one natural thing. बट जैसा कि आपने कहा कि एक साइलेंट वर्क मोदी जी की लीडरशिप में टू डेवलप द नेक्स्ट जनरेशन ओवर देयर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बेस्ड, जैसा कि हम पढ़ते हैं इतिहास में भी कि भाई इवन फ्रॉम द अपोजिंग कैंप अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन ब्रॉट टू द फोल्ड कि भाई Yes. so that is also an identification of their skill set कि भाई in the corporate world Exactly. obviously it keeps on happening कि you hire talent from all across, then you groom the talent, and हाँ, after vigorous part people are groomed for the CEOship, succession का एक पूरा plan रहता है, and आप somewhere देखिए, सॉरी, हाँ नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट आप बोल रहे हैं। हेमंता शर्मा बिश्रा है एग्जाम्पल, Mhm. वो उन्होंने आए वो बीजेपी में, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया, नॉर्थ ईस्ट के लिए उन्होंने अलाइन किए सारे स्टेट्स, और फिर आज की देन उन आई थिंक उनसे पहले मैं नाम भूल रहा हूँ, जो सीएम थे, सपोर्ट सोनोवाल किया जी, उनको। हाँ, सर्बानंद सोनोवाल जी को सपोर्ट किया, सर्बानंद सोनोवाल जी को सीएम बने, उनको सपोर्टिव रोल, उनका सपोर्टिव रोल में थे वो, और फिर आज की डेट में वो सीएम है। और ऐसे ही आप देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वो आए बीजेपी में, 2 साल उन्होंने कड़ी मशक्कत की, इंश्योर की है कि बीजेपी की सरकार दोबारा बने एमपी में, और फिर आज की डेट में वो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, और अगर अच्छा काम करेंगे तो और ऊपर जाएंगे।
So it is all about capability building and the performance. BJP that way, if you compare with any other party, it's a highly performance driven party. और और मोदी जी आप खुद देखिए, वो हर स्टेज पे परफॉर्म किए हैं, आज तक वो कोई इलेक्शन नहीं आ रहे, तभी तभी वो उस पोस्ट पे जा पाए हैं। हम्म, अगर वो आप मान लीजिए, अगर वो बीजेपी गुजरात का कोई एक आधा इलेक्शन हार जाते, तो मे भी शायद वो चॉइस ना होते, मे भी शायद अडवाणी जी आते, या शायद मे भी सुषमा जी होती, या अरुण जेटली जी होते, लेकिन नहीं, क्योंकि वो परफॉर्मर थे, कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे, तो पूरा एक जन सपोर्ट था उनको। you have mentioned very beautifully the complex nuances of governance. कि भाई the transformative leadership is setting out a vision and then getting your hands dirty into it, getting involved into the whole affairs. क्योंकि भारतवर्ष में politics और governance were quite diverse to a level. कि भाई politics is all about criticism or all kind of languages which we somewhere maybe in a primary or even a middle school we won't like the kids to indulge into that kind of राघव जी, इसका इसका मैं जो मेरा मानना है, जी मुझे लगता है ये इसलिए हुआ है बिकॉज पॉलिटिशियंस प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप नहीं पढ़ते हैं, या वो उस एजुकेट नहीं होते हैं उस पे। और मेरे को अंदर से मेरे को लगता है कि मोदी जी वो पढ़े हैं, क्योंकि वो इतने ब्यूटीफुली वो अप्लाई कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई पढ़ा ना हो ये प्रिंसिपल्स को, वो अप्लाई कर सकता था। नहीं, हो भी सकता है, नेचुरली भी हो सकते हैं लीडर, बट मुझे जो लगता है वो जिस जिस परफेक्शन से मोदी जी वो सारे कॉन्सेप्ट जो लीडरशिप के अप्लाई कर रहे हैं, मुझे तो लगता है वो पढ़े लिखे हैं, वो कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह जाने हैं और इम्बाइब किए हैं उन्होंने। Lovely, lovely. In fact, the term leadership got a kind of a negative connotation in the general public parlance because of politics. कि भाई leadership means bragging or मतलब it was not connected with the kind of leadership we actually look in organization building, the multi-billion corporations which produce results. And after all, government is one of the largest corporations ever. It defines the destiny of billion plus people in so how Modi ji tries to juxtapose the popular politics with the complex nuances of governance, because these are two desperate fields. If we see winning elections, talking in the lingo of the common people, winning their trust, getting that power, and then translating that power into programs, into complex and very tough decisions. So I think उस डायनेमिक्स पे अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें। नहीं, उसमें देखिए राघव जी, दो तीन चीजें हैं। एक, मोदी जी का एक्सपीरियंस, कि वो सीएम थे, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे देखा है कि क्या क्या कमियां हैं, he knew where the gaps were, and so it was easy for him to come in and start working, hitting the ground running, so एक वो है। दूसरा ये है कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थे पहले से ही, गैप्स बहुत थे। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा कमियां थी। फॉर एग्जांपल देखिए, मनरेगा की बात करते हैं। मनरेगा का पॉलिसी अनाउंस हुआ, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा था, वो गड्ढा खोदते थे, उसी गड्ढे को भर देते थे और उसके पैसे मिल जाते थे। और लेकिन और वो कितने लोगों को उसमें भी से भी स्मॉल परसेंटेज को पैसे मिलते थे, बाकी पैसा तो करप्शन के थ्रू जा रहा था। जो लोग काम भी नहीं कर रहे थे उनके खाते में जा रहा था। हो सकता है वो पार्टी वर्कर्स के थ्रू वो पार्टी फंड्स में जा रहा हो, तो ऐसा भी हो रहा था। तो उस पे ग्राउंड लेवल पे कहीं डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, और पीपल लेवल पे भी बहुत कम लोगों को फायदा हो रहा था, क्योंकि पूरा पैसा अगर 150 आपको 100 रुपया मिलना था, उसमें से 50 रुपया तो वो आपके आते आते तक खा जाते थे लोग, घूस के माध्यम से। तो वो हो रहा था। तो अब उसको मोदी जी ने खुद ही बोला कि मैंने तो आके उसको एक एफिशिएंट और इफेक्टिव सिस्टम बना दिया। तो इट वाज, तो मैं वो कह रहा हूँ कि उधर देयर वर लॉट मेनी लो हैंगिंग फ्रूट्स, और तो मोदी जी ने आके इमीडिएटली वो गैप फिल करने शुरू कर दिए। तो और तभी आप देखिए कि प्रोग्रेस हमारी लीप्स एंड बाउंड्स हो गई है पिछले 9-10 साल में, बिकॉज हमको पता है करप्शन था,
जो भी ऑब्वियसली करप्शन नेपोटिज्म की वजह से हमारा बहुत लॉस हो रहा था। कितने बिलियन डॉलर्स फॉरेन बैंक्स में थे। आज की डेट में बाहर नहीं जा रहे हैं, पूछते हैं कि वापस कितने आ रहे हैं। आगे तो बाहर जा रहे थे, कोई पूछता नहीं था। जैसे मोदी जी खुद ही बोलते हैं, तो अब मतलब सरकार पे इतना विश्वास है लोगों को लोग जानना चाह रहे हैं कि वापस कितना पैसा आ रहा है। मतलब ये तो कंफर्म है कि बाहर नहीं जा रहा है, वह ये है कि वापस कितना आ रहा है। तो मतलब आप देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी जो गैप्स थे, इतनी बड़ी बड़ी, और हमें पता था क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इट हैड टू बी डन एट द हाईएस्ट लेवल। तो वो है। तो एक अपॉर्चुनिटीज बहुत थी, लो हैंगिंग फ्रूट्स बहुत थे। और मोदी जी, बिकॉज ऑफ हिज 13 years of work as a administrator, he exactly knew where the challenges were and how to handle them, how to execute plans, and ensure that they were set correct. Mhm. So So, without even and the other thing, जो आपने बोला कि पॉलिटिक्स, तो यू नो वेरी अर्ली, और इस पे ग्राउंड लेवल, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू स्टार्ट एट द ग्राउंड लेवल इवन इन पॉलिटिक्स। वो Mhm. जैसे कल मैंने अपना एक्सपीरियंस दिया था। वो क्योंकि मैं बचपन से मैंने देखा है कि वो इलेक्शंस को कैसे, मतलब एक हवा कैसे बनती है, इलेक्शंस को कैसे बनाया जाता है, और वो हवा कैसे क्रिएट की जाती है, और लोगों की एस्पिरेशंस समझना, वो ग्राउंड लेवल पे मोदी जी ने किया है। वो मतलब 20-22 साल की उम्र से ही वो आरएसएस में सोशल वर्कर बन गए, पूरा देश घूमे पैदल चल के। ट्रेनों में जाते थे, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में जाते थे, मैंने जैसे कल बताया गैरेजेस में रहते थे। तो उनको पता था देशवासियों की क्या प्रॉब्लम है पूरे। आप उनसे बात कीजिए, तो अगर आप तमिलनाडु में होंगे तो तमिलनाडु की वो आपको डिटेल बता देंगे, हर हर डिस्ट्रिक्ट की, कुछ हर शहर की। अगर आप उधर नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट का बता देंगे वो सारा। और आपने देखा भी होगा कि whenever he goes and there's a rally in a particular place, you'll know कि वो उस प्लेस के बारे में बात करना शुरू करते हैं। वो इतना अच्छा जानते हैं कि वो मतलब इस तरह से लोगों को एंगेज कर लेते हैं। ही हैज दिस नैक ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल। बिकॉज Mhm. अगर वो जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, तो वो पर्टिकुलर प्लेस चित्तौड़ जाएंगे तो वहाँ महाराणा प्रताप की बात करेंगे। अगर वो झारखंड जाएंगे तो वो बिरसा मुंडा की बात करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, वो किस बात से कनेक्ट होते हैं। और So it's अब exactly like you join as a management trainee and then you superannuate as the managing director. So the अब if मैनेज, I need हाँ नहीं, to mention, yeah. मैनेजमेंट ट्रेनिंग, अब देखिए आप वो अगर आप उसको रिलेट करें कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से, तो जब आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं सपोजिंग हिंदुस्तान लेवर्स में, तो वो आपको 1 साल आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग पीरियड रहता है। आपको वो पूरे अपने फैक्ट्रीज में पूरे हिंदुस्तान में पूरा घुमा देते हैं। वो क्यों घुमाते हैं? इसीलिए ताकि यू डेवलप अ वेरी गुड आइडिया अबाउट द होल बिजनेस, Mhm. कि हमारा बिजनेस फैक्ट्री में कैसा होता है, सेल्स में कैसा होता है, क्या होता है, ताकि फिर जब आप अपने कुर्सी पे बैठे, तो जो आप डिसीजन ले, आपको पता हो कि ये डिसीजन अगर आप ऐसे लेंगे तो उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे क्या होगा। तो आपको किस तरह का, तो व्हाट काइंड ऑफ अ राइट डिसीजन यू नीड टू टेक, यू वुड हैव लर्नड बिफोर यू सैट ऑन द चेयर। वो मोदी जी कर चुके हैं। वो पूरा देश घूमे एज अ सोशल वर्कर, देश को जाने पहचाने, कोना डाइवर्सिटी को समझे, और फिर इट बिकेम सो इजी फॉर हिम टू गेट थिंग्स डन। अब वही आप देखिए, वो अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, वो तेजस्वी यादव कर सकते हैं, वो राहुल गांधी कर सकते हैं। और अगर वो खुदा ना खास्ता इस पोजीशन पे पहुंच गए तो क्या होगा, आपको हमको ये सब सोचना चाहिए। तो ये अच्छा, तो इसीलिए जो है ऑपोजिशन, बिकॉज दे नो दे डोंट हैव अ लीडर, तो उनका स्टैंड रहता है कि नहीं नहीं, ये तो डेमोक्रेसी ने, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में इट इज द सिस्टम, इट इज नॉट द लीडर। बट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज द लीडर। यू हैव टू हैव द राइट लीडर। A party or an alliance has to have a leader, if you want to take the country, the nation, the people forward. सिस्टम से कुछ नहीं होता है, सिस्टम को चलाने वाला चाहिए। अगर अगर वो हेड हेड अगर इफ
अगर वो हेड नहीं होगा तो देन यू रोम अराउंड लाइक हेडलेस चिकन। वो सिस्टम क्या करेगा? वो चल ही नहीं पाएगा, वो फिर तितर बितर घूमेगा जैसे यूपीए के टाइम में था। और ऐसा सिचुएशन आ गया था कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था। एंड यू नो दैट टर्म वाज सो फेमस ड्यूरिंग दैट टाइम। और इंडिया from top economy, it had become a fragile economy. So one bit of a tricky question, which percolates all through that, it's the persona of Narendra Modi which has eclipsed perhaps the organization of BJP or the larger Sangh Parivar ideology. So as you were mentioning that it is the RSS and the BJP sanskar, the whole parampara, whole mechanism which has catapulted Narendra Modi, or he is an outlier of the entire ecosystem per se. So what is the kind of a gap where he has taken a leap forward beyond the moderate normative curve? So नो, तो इसमें ये भी एक मेरे हिसाब से एक गलत धारणा है कि मोदी जी ने एक्लिप्स कर दिया इस सिस्टम को, वो पार्टी से बड़े हो गए। ऐसा नहीं है कुछ। जब वाजपेयी, अब देखिए, जब वाजपेयी जी थे तो क्या उन्होंने एक्लिप्स कर दिया था? तो वो पीएम रहे, और फिर वाजपेयी जी जब गए तो फिर मोदी जी आ गए। द की इज टू डेवलप लीडरशिप अंडर यू, जो आपके जाने के बाद फिर वो इमीडिएटली टेक ओवर कर लें। ये बीजेपी में मैंने तभी कहा कि बीजेपी के लिए मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूँ, लीडरशिप डिफरेंट लेवल्स पे ऑलरेडी है। आपको पता है, जैसे नेक्स्ट स्टेज पे मोदी जी के बाद आप देख रहे हैं 3-4 लोगों। उन 3-4 लोगों के बाद भी मैं देख रहा हूँ somebody like अन्ना मलाई, और जैसे मैंने कहा स्मृति ईरानी जी हैं, फडणवीस जी हैं। तो मतलब 3-4 लेवल्स ऑफ लीडरशिप अभी ऑलरेडी रेडी हैं बीजेपी। हमको पता है कि ये लोग टेक ओवर कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से कुछ एक्लिप्स नहीं हुआ है, ये उभार ही रहे हैं। और अच्छा है। और हमको हाँ, अगर मोदी जी के बाद में हमको लगता कि कोई नहीं है, तो फिर हो सकता था कि हाँ एक्लिप्स हो गया, कि अब इनके बाद क्या होगा। लेकिन आपको लगता है ऐसा कुछ कि अगर बीजेपी में आज कल मोदी जी, ऑब्वियसली वो किसी टाइम आएगा जब उन्होंने खुद ही बोला है कि वो झोला उठा के चले जाएंगे, और मुझे मुझे पक्का यकीन है वो खुद ही जाएंगे। उनको कोई हरा नहीं पाएगा, वो खुद ही जाएंगे। और वो अच्छे टाइम पे ही, आई थिंक, वो जब तक वो फिट है, एक्टिव है, मेरे को जो लगता है वो उसी टाइम ही जाएंगे। तो और तो वो नेक्स्ट लेवल पे लीडरशिप, आप the बताइए मुझे। contrasting competition is nowhere close to what perhaps the collective compact of BJP, RSS is हाँ all. हाँ। That's why. I तो would like to I would like to come in here, sir, and put a या small श्योर। question that what it appears is that when we are saying that Modi ji is not eclipsing the party or party se bade nahi hai wo, but he is taking in his ambit the future leaders, he's grooming them, he's developing future leadership for who will take charge, after him. So it's also is it right to say that it's also that while he is the leader, he is wielding the power, he's clear in his decision making, he's very decisive, he's very I should say voracious. I mean, he's very strong in his power wielding and decision making and clarity of thought, priority nation first. And but then at the same time he's grooming future leaders. So while he is the PM, so one can the image in the mind, imagery in the mind which comes to the citizens is that our prime minister is very powerful, very strong, very competent, and he's putting the nation first. So the question of eclipsing, which you mean to say, is that the power, the position requires to wield that power, and he's doing that. Yeah. So So he's wielding the power in the right way, right. wielding the power in a way that he is empowering people under him. So he is not suppressing. अब आप खुद देखिए, आप योगी जी को देखिए, आपको लगता है उनको कोई सप्रेस कर रहा है? उनको फ्री हैंड है। वो बुलडोजर चला रहे हैं अपना, वो अपना अब आज की डेट में आपको खैर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो अच्छा ही है, बट इवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पे
2013-14 में सिर्फ 1% कैपिटल इन्वेस्टमेंट आता था प्राइवेट सेक्टर में यूपी में। आज की डेट में 16.2% आ रहा है यूपी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो मतलब और टॉप टॉप पे है वो, मतलब अब आज की डेट में डेवलपमेंट के टॉप 3 स्टेट्स में है यूपी। सो हु इज डूइंग दैट? इट इज योगी हु इज डूइंग दैट। योगी जी का नाम आ रहा है, और कुछ गलत होगा तो योगी जी ही रिस्पॉन्सिबल होंगे यूपी में। लेकिन मोदी जी, यू नो, ही इज wielding the power in a way which he should, for the betterment of the country as well as the people and empowering the people. अब आज की डेट में आप देखिए, G20 का ही ले लेते हैं एग्जांपल। अभी अभी राजा जी बोल रहे थे कि अब यूएस टीम भेज रही है यहाँ के, कैसे इतने लोगों को इन्वॉल्व कर लिया। तो अब उसमें कहाँ उन्होंने अपना पावर यूज किया टू इन्वॉल्व 60 सिटीज, 220 प्लेसेस पे, 220 मीटिंग्स हुए। There were hundreds and thousands of people who were directly and indirectly got involved with G20 meetings. तो अब क्या हुआ? ये तो एम्पावरमेंट ही हुआ ना। तो इन्वॉल्व किया मोदी जी ने या उनकी टीम ने इन्वॉल्व किया सबको। ऐसा कभी नहीं हुआ दुनिया में, कभी पहली बार, ये पहली बार हुआ है कि 60 सिटीज में आपके 220 मीटिंग्स हुई हैं और उसमें लाखों करोड़ों लोग हमारे इन्वॉल्व हुए हैं। तो अब ये आप इसको क्या कहेंगे? ये he has wielded power in a right way, or he has wielded power in a wrong way. He So we has come to involved the people. close of this lovely session whereby Randeep ji has built upon the personality and beliefs of Narendra Modi ji, which transcended into his differentiated and unique governance style. And he reminded us that his leadership style is more on the verge of participatory and transformative leadership, which is almost, it's a different set altogether from a laissez-faire and an authoritative part, which supposedly looks to people because they have never had an experience of such a hands-on prime minister or a chief minister per se, because Modi ji is known to get his hands dirty into the real nuances of the projects out there, and he leads things by example. And वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है, the kind of exponential efficacy which we are seeing at the operational level is just phenomenal. Strategic directions and decisions apart, but what is being seen as a delivery is simply mammoth. And what also Randeep ji talked about, that a whole battery of the next generation of leaders is also being groomed. Usko kahin na kahin, the filter of the binary, I would say the politics part, the hearsay part, usse hatkar jo dekhna hoga. And that's why it is very, very important ki the leadership books, what we read in the management parlance, it has to be applied to the domain of politics. And तुरंत से चश्मे हट जाते हैं, जो जाले हैं वो छटने लग जाते हैं. And that's why this Tete-a-Tete with Randeep ji, the author of The Crusader, he brings to with such a, like a management guru, he just comes through a leadership coach, he just dispels all the wrong notions and puts it with a mathematical precision कि भाई इसको यूं देखो आप. It is not कि I am a party member or I have to support it some way or the other. His argumentations are really very, very phenomenal. So we will continue this this Saptah for the third session tomorrow, where the next 4 sessions will be devoted on specific themes of transformation. The first 2 were on the generic part of it all. The key themes that shaped political narrative during Narendra Modi ji's prime ministership. So tomorrow it will be about how nationalism and secularism, this narrative has got changed. Then we will be picking up on the Modinomics, national security and India's spiritual and cultural heritage, which was on such a grand display during the G20 New Delhi summit, phenomenally. So that will be the agenda for the next 4 days. So thank you so much, Randeep ji, for really illuminating us, and through this platform, reaching out to the management school, to the young learners, because leadership is not just about the CEOs of some Fortune 500 corporations.
And somewhere or the other, leadership in the domain of politics got so intertwined कि कोई भी अगर लीडरशिप की बात वहां करता है तो वो नेगेटिव कॉनोटेशन में चली गई. Perhaps Modi ji has brought that respect back into the domain of politics कि भाई this is what leadership is all about. And thanks to scholars like you who have really opined upon it from that management vantage. Thank you so much. We will be meeting again at 9 p.m. tomorrow. Namaskar.